Good evening to all. Today we discuss multiple choice question history first chapter, the nationalism in Europe. First we start the word nationalism. What is nationalism? The desires of a group of people, इच्छाएं जो है group of people who share the same common identity, race, culture, language to form an independent country. Nationalism is a deep feeling, a deep love or pride for your own country. राष्ट्र प्रेम की भावना जो है it is known nationalism, and nationalism is start from Europe. We read in this chapter, and now it's our practice time, so let's start. The French Revolution and the idea of the nation. Which of the following artists, I give you 1 minute for all questions, which of the following artists depicted a world map made up of a democratic and social republic? Your chapter is start from a picture, a series of paintings, and you also know the artist name. Okay, I hope you already do take. Yes, Frederick Choriot. Frederick Choriot is the artist. The color. Okay, Frederick Choriot. C option is correct. फ्रेडरिक शोरियो वॉज ए फ्रेंच आर्टिस्ट. यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि फ्रेडरिक शोरियो इज विच कंट्री, बिलोंग टू विच कंट्री. तो फ्रेंच आर्टिस्ट हैं हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स इन 1848 विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम. जो उसकी ड्रीम्स थी, ही विजुअलाइज हिज ड्रीम इन ए series of print with world made up of democratic and social republic. Mentioned also here democratic and social republic, Frederick Choriot. Next question is, which of the following was not among the measures adopted by the French revolutionaries to create collective identities? So which are not measures? Ideas of La Patrie, of course. Tricolor flag, yes. Regional dialects were encouraged. Hymns composed. So which were not major adopted by the French revolutionaries? तो ऑप्शन सी. रीजनल जो डायलेक्ट्स होती हैं, जो बोलियाँ होती हैं, these are not majors. Next one is, which of the following is not true with reference to Napoleon? नेपोलियन कोड आपने रीड किया था, तो which is not true about Napoleon? He introduced Napoleonic Code, also known as the Code of 1804. He promoted democracy in France. He made the administrative system more rational and efficient. The Napoleonic Code was exported to all regions under French control. Okay, I give you 1 minute. This one is also correct. This one not correct. He not promoted democracy in the French. This one is also correct. These are the feature of also the feature of the Napoleonic Code also. So answer B. He not promoted democracy in France. Next we are doing, which of the following is true regarding the new artist depicted liberty during the French Revolution. Liberty during the French Revolution. As a female figure, the Statue of Liberty with a torch of enlightenment in one hand. उनके हाथ में टॉर्च है, जैसे आपने उस जो
फ्रेडरिक शोरियो का जो प्रिंट देखा था उसमें देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और एक हैंड में उनका चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ये आपने 9th क्लास में रीड किया था, चार्टर्स ऑफ राइट ऑफ मैन इन अ अदर हैंड। Blindfolded woman carrying a pair of winging scale, the gold red and the black tricolor rays of the rising sun. So true regarding the new artist depicted liberty during the French Revolution. Option A is correct here. Next, say which of the following is not true regarding the Civil Code of 1804? Not true. Equality before law, universal adult franchise, right to property, no privileges based on birth. So not true about B option. Universal adult franchise means you have the right to vote who has 18 या more than 18. Next, what did the ideas of La Patrie and Les Citoyens signify the French Revolution? It's so simple question and all you know the answer. The fatherland and the citizens. Napoleon invented Italy. उन्होंने इन्वेंट किया है इटली पर कब? In 1790s. The first expression of nationalism came with Industrial Revolution of England, American War of Independence, French Revolution या Russian Revolution. Think about and give me nationalism first expression. Yes, one C option is correct here. Next question we are doing the making of nationalism in Europe. The main function of the Prussian Jovelrian was. मेन फंक्शन क्या है प्रूशियन जोवेलरियन का? यस, गिव द आंसर. वेरी गुड. टू अबोलिश टैरिफ बैरियर्स. जो बैरियर्स हैं बनाए गए थे उनको रिड्यूस किया गया था. 32 बैरियर्स आर देयर और उनको रिड्यूस करके 2 किया गया था. द जर्मनी टू मेजरिंग द यूनिट एलिंग वाज यूज्ड टू मेजर. मेजर मतलब किसको मापने के लिए? क्लॉथ, लैंड, थ्रेड, हाइट. यस, क्लॉथ इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज द हैबिसबर्ग वाज द रूलर ऑफ ऑस्ट्रियन हंगरी, जर्मनी, डच रिपब्लिक एंड स्विट्जरलैंड. यस, ऑस्ट्रिया हंगरी. Next, which custom union was formed by Prussia to abolish tariff barriers? Same question here, but थोड़ा सा सेंस चेंज किया गया है तो obviously Jovelrian. B option is correct here. In which year was the Congress of Vienna held? Yes, after the defeat of Napoleon at Waterloo in 1815. Vienna Congress in 1815. Yes. Next, say which of the following countries did not attend the Congress of Vienna? Not attend the Congress of Vienna. Yes, Switzerland. Remaining are the part of the Vienna of Congress 1815. Next question. Conservatives did not believe in establishing and preserving the monarchy, the democracy, traditional institutions of state and society, and social hierarchy. Yes, आपने कंजर्वेटिव्स रीड किया था 9th क्लास में. कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स, लिबरल्स. तो दीज आर नॉट बिलीव इन द establish and preserving democracy.
फाइंड द ओड वन, ओड जो है बिल्कुल अलग है। कार्बोनरी, यंग इटली, यंग यूरोप एंड जैकोबिन्स। जैकोबिन्स आर द क्लब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा था रॉबेस्पियर के बारे में। तो कार्बोनरी, यंग इटली, यंग यूरोप, दीज आर द यूनिट्स जो ग्यूस मेजिनी ने बनाए थे। तो ये सबसे अलग है, कार्बोनरी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो ओड हमें बताना है, तो आंसर इज जैकोबिन्स। The four European powers who collectively defeat Napoleon were, and also the member of the Vienna Congress. Yes, take your time. Austria, Prussia, Britain and Russia. These are the Austria, Prussia, Britain and Russia. A option is correct. Who among the following was described as the most dangerous enemy of social order by Duke Metternich? Duke Metternich, you know this name, I think. The famous statements given by him. Yes, ये मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर किसको मानते हैं? ग्यूस पे मेजिनी को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट से विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म का फीचर नहीं है, नोट मेंशन है, जहाँ पे भी नोट है वहाँ पे आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। नोट ए फीचर ऑफ रोमांटिसिज्म, glorification of reason and science, focused on emotion and institutions, believed true culture was to discovered among Das Block. Das Block is a Germany word is used for common people, showed the popularized true spirit of the nation through folk song, poetry, music. So not a feature of romanticism. Yes, A. Glorification of reasons and science. Which of the following celebrated national struggle through Polonaise and Machurka? Yes, Karlo Kropotkin. Option A. The Frankfurt Parliament was convoked on date and year. You have to mention. हॉल ऑफ मिरर, इंडोर टेनिस कोर्ट। ये इंडोर टेनिस कोर्ट में जो आपका स्टेट जर्नल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उसकी मीटिंग हुई थी भाई। बास्टेल द फोर्ट जो डिस्ट्रॉय किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइप में। द चर्च ऑफ सेंट पॉल। यस, बी ऑप्शन, द चर्च ऑफ सेंट पॉल। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन? ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई। नो, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर इम्पोज की गई थी ट्रीटी ऑफ वर्साई, आपने 9th क्लास में रीड किया था। एंड आल्सो द रिजल्ट फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ट्रीटी ऑफ वियना जो नेपोलियन के हार के बाद की गई थी भाई आपके ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड ट्रीटी ऑफ लोसाना। तो विच वन इज? Yes, Treaty of Constantinople. Who said these words when France sneezed, the rest of the Europe catches a cold? Yes, Duke Metternich, Chancellor of Vienna Congress. What emerged as a force which brought about sweeping changes? Sweeping मतलब suddenly change in the political and material world of the Europe in the 19th century. Emergence of nation states, the multinational dynastic empires, territorial states, absolute monarchy. Yes, emergences of nation state. Yes, who was responsible for the unification of Germany? जर्मनी के लिए यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was proclaimed German emperor after its
Unification. Prussian King William I, Russian King William I, Chief Minister of Otto von Bismarck and लेनिन. लेनिन आपके रशियन रिवॉल्यूशन में जो बोल्शेविक पार्टी है उसके लीडर थे. तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ओटो वन बिस्मार्क. वेरी गुड. 4.3 का प्रूशियन किंग विलियम वन, रशियन किंग या चीफ मिनिस्टर ऑफ ओटो वन. तो आंसर ए. Who among the following founded the underground society namely Young Italy in Marseilles? Metternich, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Cavour. तो ऑप्शन सी. Who was proclaimed king of United Italy in 1871? जब यूनिफिकेशन हुआ है, प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1871. yes yes think about. yes, Victor Emmanuel II. These all questions asked already in CBSE previous year. Who amongst the following Italian leader was neither a revolutionary nor a Democrat? ना तो वो कभी इटालियन लीडर हैं, रिवोल्यूशनरी रहे हैं, और ना ही कभी डेमोक्रेट्स रहे हैं. यस, कैवोर. ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following was the result of the Act of Union 1707? United Kingdom of Irish, United Kingdom of Scotland, United Kingdom of America, United Kingdom of Great Britain. Yes, United Kingdom of Great Britain. Act of Union 1707. Who led the protest movement against the Protestant in Ireland? Yes, Wolfe-Tone. Which of the following was allegory of the French nation? So allegory, symbolic representing an abstract idea represented through a person or a thing. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिबर्टी है, मरियने है, जर्मेनिया है. यस, मरियने. What does the crown of oak leaves worn by Germania stand for? जो जर्मेनिया है उन्होंने जो ओक लीव्स से बोन क्राउन पहना है, कोरेज को, हीरोइज्म को, फ्रीडम को, यूनिटी को. किसको सिंबलाइज कर रहा है? वो हीरोइज्म को गई. विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द एलेगोरी ऑफ द जर्मन नेशन? जर्मन नेशन में आपको बताना है. यस, जर्मन में नेशन में जर्मेनिया. यस. ऐसे ही फ्रेंच नेशन में क्या है आपकी? मरीनी. Next we are doing nationalism and imperialism. Which area was known as the power keg of Europe? Ottoman Empire, Italy, Balkan and Germany. Very good. Balkan is known as the powder keg of Europe. Which of the following is not true regarding the Balkan problem? Balkan states was very jealous to each other. Each state wanted to gain more territory at the expense of other. Balkan were also the scene of big power rivalry. Balkan were not under the control of the Ottoman Empire. So D option is not true regarding Balkan problem. जो आपने बल्कान नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म में रीड किया था, बल्कान प्रॉब्लम इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द, they were not under the control of Ottoman Empire. Ottoman Empire is also known as Turkey at present. Which one of the following power was not interested in extending their own control over the Balkan? Not
इंटरेस्टेड तो स्विट्जरलैंड, रिमेनिंग आर इंटरेस्टेड. Now we start set 2. Who was Frederick Choriot? I think you all know. Yes, artist. What was the theme of the printing of Frederick Choriot? Democratic Social Republic. So democratic. Yes. The French Revolution occurred in which year? 1789. 14 July 1789. With date and year. नेक्स्ट है हु अमोंग द फॉलोइंग होस्टेड द कांग्रेस एट वियना इन 1815? ड्यूक मैटरनिच. ड्यूक मैटरनिच. सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेबल ऑफ 1832? तो ये ट्रीटी 1832 में है. यस, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. ऑप्शन बी, इट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन. व्हाट डज ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ weighing scale symbolize? What is the meaning of this? Equality, liberty, harmony, justice. Yes, ऐसी महिला जिसकी आंखों पर पट्टी है और उसने हाथ में तराजू लिया हुआ है, तो उसका सिंबलाइज क्या होता है बेटा? जस्टिस. आई होप दिस आर हेल्पफुल टू यू.